खास तौर से जब हम देख रहे हैं भारत की जो सीमा है उसकी किस तरीके इसके वहां हालात हैं, लेकिन इसी को लेकर आज दोपहर 12 बजे भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक के बीच टेलीफोन पर बातचीत होगी। इससे पहले 10 मई को भी दोनों पक्षों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इस बातचीत में पाकिस्तान ने आगे बढ़कर सीमा पर संघर्ष विराम की पेशकश की थी। आज की बातचीत के दौरान सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर आगे की रणनीति तय होगी। और खासतौर से भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले में 100 से अधिक बड़े आतंकवादी मारे गए। नई दिल्ली में तीनों सेनाओं की प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इन आतंकवादियों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे आतंकवादी शामिल थे, जो IC-814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में भी शामिल थे। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. डीजीएमओ ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई कैंप को नष्ट किया गया। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हुए और पाकिस्तान के कई जवान मारे गए। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. वहीं भारत के डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन संदेश भेजकर आगाह किया गया कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति का अगर दोबारा उल्लंघन होता है तो भारतीय सशस्त्र बल इसका जवाब बेहद सख्ती के साथ देंगे। We have sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation